हेलो, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो जो लोग भी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस ताकि उनको करियर में कुछ ऐसे ऑप्शंस चाहिए जैसे कि फिनेंस एंड इन्वेस्टिंग। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि वो जब ऐसे सोचते हैं कि एक फाइनेंस और इन्वेस्टर बनने के लिए उन्हें एक फाइनेंस की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी। बट बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं जिन्होंने अपना करियर में म्यूटेशन किया होता है और कभी इंजीनियरिंग से एक फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट का भी जर्नी किया। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही गेस्ट है जिनका नाम है कुमार वैभव। कुमार वैभव मेरा जूनियर भी था कॉलेज में। तो मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है इसके साथ बात करके। और साथ में बहुत सारे लोग होंगे जो यंगस्टर्स हैं जो कि एक करियर देखना चाहेंगे अगर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में। तो वैभव उनके लिए बहुत अच्छा इंस्पिरेशनल सोर्स हो सकता है। तो नेक्स्ट टू यू वैभव, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। एंड आपने मतलब आप जहाँ तक मुझे याद है आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं और आपने फिर चेंज किया टुवर्ड्स फिनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। तो आपकी जर्नी और थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे ताकि लिसनर्स को पता चले। Sure, sir. So first of all, thank you so much for inviting me to your podcast. जैसे आपने कहा कि मैं आपका जूनियर था, तो it would be really exciting moving down this podcast. Yeah, जैसा आपने कहा कि we both belong to mechanical background. फाइनेंस का कीड़ा एक्चुअली ऐसा है कि it was not something जो इंजीनियरिंग में, ये कुछ था जो स्कूल डेज से ही आने लगा था धीरे धीरे। बट या जैसा आपको पता है कि एक इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। तो करियर वाइज मेरे पास एक यही ऑप्शन था कि वंस यू गेट इनटू इंजीनियरिंग यू कैन डाइवर्सिफाई टू एनी फील्ड पॉसिबल। लाइक आज के डेट में मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, इन्वेस्टमेंट बैंकर भी है। लाइक एनीथिंग यू से, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप फाउंडर्स बिलोंग टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग इटसेल्फ। सो बीइंग इनटू मैकेनिकल एक चीज है कि जो लोगों को समझ में आता है फाइनेंस, पीपल थिंक कि फाइनेंस बहुत ही लेम चीज है, नो मैथमेटिक्स, नो कैलकुलेशन, नो प्रोबेबिलिटी। बट जो हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ स्टॉक ब्रोकर और एज अ ट्रेडर, वी आर कम्प्लीटली इनटू मैथमेटिक्स। प्योर क्वांट मॉडल यूज करते हैं फॉर एडवाइजरी एज वेल एज ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एंड एवरीथिंग। सो मैं बेसिकली रांची से हूँ। आई स्टडीड माई like schooling from St. Anthony's School Ranchi and then Delhi Public School Ranchi. Post that, I joined you as a junior for engineering. And yeah, so down the lane second year से ही मेरे अंदर, just because मैकेनिकल में हम लोग का कुछ ऐसा शेड्यूल हुआ करता था कि टाइम काफी मिलता था। सो आई थॉट ऑफ यूटिलाइजिंग दैट टाइम इनटू सेल्फ लर्निंग। सो मैंने स्टार्ट किया जो चीज एट दैट टाइम डाउन द लेन इन 2014, हम लोग के पास इंटरनेट का वैसा कोई अप्रोच नहीं था। प्लस जो ओपन सोर्स आज के डेट में है ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम और एनीवेयर, so it had to come through within. So down the lane in 2024 में किया कि हाँ मार्केट होते क्या है, हाउ थिंग्स वर्क, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस में इवन एफडी इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस। हमारे पेरेंट्स यूज करते हैं, एफडी हो गया, एल हो गया, बट दे आर ओल्ड स्कूल थिंग्स। मतलब रिटर्न कुछ है नहीं, इन्फ्लेशन बीट हो नहीं रहा है। सो आई थॉट टू डाइव डीप इनटू द फाइनेंशियल मार्केट। तो उसमें मेनली आपका स्टॉक मार्केट, टू बी प्रिसाइज इन इंडिया, जो लोगों को समझ में आता है। कुछ लोग इसको गैम्बलिंग भी समझते हैं, बट व्हाट इट इज प्योरली मैथमेटिक्स इफ यू हैव अ प्रॉपर अप्रोच टुवर्ड्स इट। रिस्क सब जगह है, बट या विथ रिस्क कम्स अ प्रॉपर रिवॉर्ड, and the day you have a proper risk to reward, you're going to create a good amount of wealth for yourself. So कॉलेज के ही दिनों से मैंने सीखना स्टार्ट किया कि हाँ ट्रेडिंग कैसे होता है, टेक्निकल्स क्या होता है, ग्राफ्स क्या होता है। एंड देन मेरा पूरा फोकस ही जा चुका था कि प्लेसमेंट भी कोई ऐसी कंपनी में लेनी है जो एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हो। एंड एट दैट टाइम बीइंग क्वाइट नोवाइस इनटू दिस सेक्टर, हमारे कॉलेज में क्या था कि पहला कंपनी टीसीएस आता था, तो टीसीएस में बैठना ही था। इसमें मैंने अप्लाई किया बट हो नहीं पाया। एंड टिल दैट टाइम फैमिली से काफ़ी प्रेशर, यू हैव टू गेट अ प्लेसमेंट। फाइनल सेमेस्टर का लास्ट 2 मंथ्स बचा था, एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले थे।
बट या बिफोर दैट मेरे जिंदगी में एक ऐसा स्विच आया, like down the lane in 2014 I went through a Hindu article Hmm. which was a kind of article which was describing Zerodha Yeah. and Nitin Kamath. So Mm-hmm. basically, Zerodha was a stockbroking firm, as we all know. Like today, it's the hottest cake in the financial market in India. So everyone बिल्कुल. knows about Zerodha, Nitin Kamath, and Nikhil Kamath. So these um, two, like Nitin sir and Nikhil sir, were my first boss ever. And 2014 only, I approached Nitin sir saying that okay, I'm a financial geek. I want to meet you. So it was a Dashara basically. Colleges band ho chuke the, and I thought, why not to meet him, staying back in Bangalore, so that I can enrich my knowledge a bit. So he said, yeah. And to the to my greatest surprise, he responded me saying that okay, I'm not available this time because I'm traveling for holidays. But yeah, next time just ping me. I'll surely meet you. Or this was back in 2014. फिर we were entering third year भी खत्म हो गया. Like कोई approach मैंने नहीं किया because time नहीं मिल पा रहा था. And suddenly just in job hunting मैंने उनके portal पे बस एक resume डाल दिया. And I remember like we both belong to a cultural club in college called Nexus. Yeah. And it was 21st of March हमारी farewell थी Nexus की Wonderful. in Mm-hmm. country club. And there I just I was into the swimming pool and got a call from the HR saying that Very nice. uh, when can I schedule a interview for you. So I said you can do it any time leaving today. आप कल भी कर सकते हो, but he said okay for you on 23rd of March. And I was in college, and that was the biggest exciting thing for me. Yeah, because for me, I told you, like at that time I was focusing only on two things. एक financial services company, और दूसरा अगर वो बैंगलोर में मिल जाए तो it would be a great thing, because when it comes to finance, fintech आज के दिन में काफी पुराना चीज हो चुका है. Correct. But at Correct. that time, 2016, fintech was just evolving. Like AI today. Absolutely. So at that time I was very much eager कि हाँ अगर बैंगलोर में मिल जाए तो at least I'll have an option to explore into financial sector as well as technology. So You will have a launching pad for absolutely. yourself. And that's what it happened. Like I went for the interview, and people were like, even the HR was a bit doubtful, saying that you belong to a mechanical engineering background and you're coming because आज के डेट में जितने भी आपके quant funds हैं, quant fund, hedge fund, even mutual funds, they are hiring IITians, Yes. mathematicians, Mm-hmm. research scholars who are there into deep mathematicians. Yeah. Like it's all about mathematics in today's world. But So Vaibhav, just before you explain your interview experience, तो अगर इसको हम थोड़ा सा सम अप करें जो फर्स्ट टाइम लिसनर्स हैं कि मतलब ऐसा लोगों की जनरल माइंडसेट है कि जो यंग बच्चे जो अभी कॉलेज से ग्रेजुएट होने, एक तो कि आप अगर फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं तो आप मतलब इसमें नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है. not at all. हाँ, दूसरा चीज जो लोगों का एक जनरल माइंडसेट है अबाउट फाइनेंस की इट इज अ गैम्बल और बहुत बड़े लोग खेलते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, Correct. वही लोग इन्वेस्ट करते हैं, वही लोग रिच हो सकते हैं, वही लोग उसके फिर फायदे उठा सकते हैं. Right. तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन यंगस्टर्स में और जनरल मासेस में भी. तो उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक किया दैट इट इज नॉट सो, एंड इसके पीछे प्योर साइंस है एंड प्योर मैथमेटिक्स है, जो कि एक मतलब आप स्टेम के किसी भी बैकग्राउंड तो आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस तो आता ही है. आता अगर ही आप बेसिक्स है. हाँ, और वो प्रोबेबिलिटी और नंबर गेम्स तो आपको मतलब 10th और 11th 12th Exactly. के मैथमेटिक्स में भी सिखाया जाता है. Absolutely, तो sir. उसमें अगर आप थोड़ा सा बिल्डअप करोगे तो यू हैव अ चांस दैट, एंड आपको थोड़ा सा क्यूरियस होना पड़ेगा टू फाइंड द राइट पीपल, टू फाइंड द राइट मेंटर्स एंड कीप अप्लाइंग, जैसा आपने बताया कि मतलब अप्लाइंग टू द मोस्ट रैंडम प्लेसेस पॉसिबल, लाइक जहां पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं भी है तो वहां पर आप अप्लाई करो एंड यू माइट हैव अ चांस. जैसे वो Absolutely. अनुपम खेर का एक शो आता था कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. तो या यू आर अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट. Correct. एंड या सो प्लीज आप Yeah. आगे का So अपना इंटरव्यू. coming down to that mindset, like HR ने खुद कहा कि because at time ना जैसा आफ्टर ज्वाइनिंग जीरोधा मैंने देखा कि सबके बैकग्राउंड में इंजीनियरिंग था ही था, majority of them, because what I found was in my career, like engineers are much more versatile.
so they can evolve in any environment possible. So most of the people, be it tech, sales, anywhere, people were from engineering background itself. So I said, look, it does not matter कि मैं engineering background से हूँ या commerce से, it's all about my interest. So we had an interview basically, and the final interview was taken by the Nitin Kamath. In today's date, he's like, like the biggest Billionaire. source of billionaire, and everything that a middle class Indian thinks of achieving. Dreams of, yes. Correct. He has achieved it, and that too, very humble, very very humble, because I've worked very closely with him. So he's too much down to earth. Like despite of achieving everything Yeah, today. even 2 days before on Twitter, oh sorry, X, I found a very interesting post by someone. कोई एक छोटा सा स्टार्टअप था and he just emailed from somewhere, and he just sent a short email, and Absolutely. within 4 hours he got a reply, and he got him connected. Correct. They are unapproachable. They are approachable with the They correct are mindset. approachable, absolutely. And what I have seen a personal approach in these two brothers also. Like even after leaving Zerodha, एक बार कुछ ऐसा काम आया था. I just uh, I just thought of shooting him a mail, or to my surprise, I thought like he gets so much mails every day, and that to now when he's into VC and all, like आज की डेट में हर कोई जो भी स्टार्टअप कर रहा है, हर VC को एक कोल्ड मेल डालता ही डालता है. So I thought like, okay, will he respond, not respond? And to my surprise, रात होते होते I got a response from him. And it was very much surprising, like back in 2018-19, when everything had evolved too much. Yeah, At that time also, he gave a preference to every mail. So and the best thing what I learned in Zerodha, like after joining, so yeah, interview was taken. Final interview, there was 3 rounds basically: HR, VP, and then CEO round. And to my knowledge, as per okay. HR, okay. sales to tech to, at that time, this you would be knowing Small Case. Mm-hmm. Small Case is a investment platform. So Mm-hmm. at that time, those guys were incubated by Zerodha. Uh, Small Case was launched. So I had a complete experience under a single roof. अभी क्या होता है, once you join sales, आपको सिर्फ sales सीखने को मिलता है, be it any financial service company. But I was lucky enough to join Zerodha and learn each and everything, be it from trading, operations, how things are working, quality, each and everything. And then after joining Zerodha, like again that curiosity of getting into finance full time was there into me. And तब मैंने सोचा MBA करने का. And luckily I got into NMIMS, Bangalore campus basically. And Vaibhav, sorry to Yeah. disrupt you. ऐसे अगर क्योंकि ये जो MBA का जो थॉट आया, तो इसमें मतलब जैसे आपने जब फाइनेंस में 1-2 साल शायद काम कर लिया था, एंड उसके बाद यू फेल्ट दिस नीड Correct. दैट After कि 1 year. मतलब हाँ कि मुझे मास्टर्स करना चाहिए. Right. तो मतलब इज इट दैट इम्पोर्टेंट कि मतलब यू शुड हैव एन MBA, या फिर आपको लगता है कि मतलब ठीक है, मतलब किसी को अगर एक मान लो ट्रेडिंग में या फिर कुछ इस पे इसके स्पेशलाइजेशंस होते होंगे MBA स्कूल्स में, जिसमें कि आपको अगर पर्टिकुलरली फिनेंस और ये सब में करना है, तो उस इंटरेस्ट पे आप उसमें जा सकते हो, और उसमें मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू हैव दिस मास्टर्स? As of today, like what I'm talking about is back in 10 साल पहले. It's almost a decade. 2016, I passed out in 2016. I got into MBA in 2017. तो उस समय की चीजें कुछ और थी. हाँ, and I'll tell you one MBA, because for me, I'm a person who does not believe that much into. Again, this can be a controversy, but yeah, I'm a person who is educated, but I don't believe into that much into education system. Because when it comes to proper education, when it comes to our system, the best thing was, I don't know, like if you have gone through
लाइक आज की डेट में जो भी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है पूरा खत्म हो चुका है. दे बिल्कुल डोंट, बिल्कुल जैसे मतलब वो अभी किसी ने शायद निखिल कामत नहीं या किसी ने बोला था कि करेक्ट, एमबीए करना आज की डेट में एक भूल होगी. एब्सोल्युटली, मतलब एंड मतलब दैट्स, उसमें बायसेस हो सकते हैं, नुआंसेस भी हैं उसके, क्योंकि लुक इट्स अगेन योर अप्रोच सर. अप्रोच. यस यस. जैसे मेरा जो अप्रोच है, इट वाज कंप्लीटली फाइनेंशियल सेक्टर, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप मेनली. मेरे अंदर वो सर, आई वेंट टू कॉलेज जस्ट बिकॉज ऑफ माई फैमिली प्रेशर, टू बी फ्रैंक, कि हाँ, आई हैव टू सेट अ मोस्ट ऑफ अस, बेंचमार्क. मोस्ट ऑफ अस. एब्सोल्युटली. Secondly, when I was working with Sirodha, I used to interact with a lot of clients. तो उनका एक पर्सपेक्टिव था, लाइक कुछ लोग आपसे काफी क्लोज हो जाते हैं, राइट? वंस यू गेट इन कपल ऑफ कॉल्स, अग्री अग्री. if they find okay, he is a person who is having a potential. तो मैंने, मेरे काफी clients ने, so basically this inspiration mainly came from my clients. They said कि भाई, अगर तुमको अगर थोड़ा सा और एज करना है ना, तो do a MBA from a tier 1 college, or do a FRM, या या या. financial risk management. So I thought, okay, let me go for CAT and all those exams. So मैंने दिया, and coincidentally MBA करना एक ऑब्जेक्टिव उस समय, once you get into the market as a sales person, उस or समय बहुत सारे ऐसे correct, दरवाजे थे जो एक डिग्री से, खुलते तो थे, वो डिग्री absolutely. हाँ होनी चाहिए. Down the lane, that's what I am every time emphasizing. एक less educated person try to pitch his own idea or something like that, मिलता है when it comes to a educated person. And आज की डेट में भी when it comes to startup arena, when you see most of the startups funded uh, by VC are mostly founded by IITM. That's a a fact into the market, most of them. So वहां पे एक वो edge आ जाता है कि हाँ, if you're doing something, तो being on the best part possible. So that was only the reason कि मैंने MBA किया. Otherwise I was not at all interested in doing MBA, because मुझे पता था कि ट्रेडिंग करना, investment analysis and everything, it's my cup of tea. I can do it without even taking a formalized degree. So and again, when it comes on today's date, I don't think MBA is at all justified, because again, back in the MBA colleges आपको कुछ पढ़ाया नहीं जाता है when it comes to trading. करेक्ट करेक्ट. ट्रेडिंग का आई थिंक ABC ही सिर्फ पढ़ाया जाता है मैक्सिमम इन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस पॉसिबल. अपार्ट फ्रॉम दैट दे डोंट टीच यू एनीथिंग. जो करना है आपको खुद ही करना है. what what you get into the best IIMs or the best B school campuses is only the network. या It's या all या. about the network that you नेटवर्किंग. get. Otherwise जो कोर्स वहां हो रहा है वही कोर्स एक tier 2 tier 3 colleges में भी हो रहा है. And that was the reason कि I was not at all interested, but yeah, I did. When it comes to today's context, it's not at all needed. I know, I had a intern working for me back in 2020 COVID, and that guy was first year BSc economics, BSc no, yeah, something BSc economics or something, I can't recall, but हाँ वो कुछ मतलब economics और इसी side में. Despite of in being in first year, markets को इतना अच्छा से catch किया कि just after 1 year when I asked like, okay, how's it going, he said, sir, I'm making 20-30% in swing trading. 20-30% is a very big number. Last year markets ने काफी खराब, like when it comes to stock market, means काफी sluggish. So and despite of those environments, like in the last 3 to 4 years, he's making consistently 24-26% per annum, which is a very great return. And उसने like अपना graduation पूरा भी नहीं किया था, and first year of BSc he's doing it, and he's doing it very perfectly. So again, it's all about your knowledge, and what it matters in trading, investing and everything is more than knowledge, and is your patience, your mindset, how you approach the market, how you approach the volatility. बिल्कुल बिल्कुल. वैभव, आपने एक बीच में बहुत अच्छी बात बोली थी, दैट इज अबाउट अप्रोच. Correct, आप किसी भी चीज को अप्रोच कैसे कर रहे हैं, इवन इफ यू वांट टू हैव अ डिग्री, डिप्लोमा और व्हाटएवर यू वांट टू डू, व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेक आउट ऑफ इट, आप उससे absolutely, मतलब निकाल क्या रहे हो. अब हम उसके खिलाफ या उसके साथ नहीं है कि आप डिग्री करना चाहते हो या नहीं, बट आप करना भी चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो, और नहीं करना चाहते हो तो क्यों नहीं करना चाहते हो. बिल्कुल, आपके दोनों में एक अप्रोच. तो ये मेरी एक थॉट प्रोसेस है कि thought मैं process इस है. हाँ, कि मैं ये नहीं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, और मैं उसको नहीं करते हुए
अपना एक अचीवमेंट जो पाना चाहता हूँ वो मैं अचीव कर ले रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू डू इट। ठीक है, उसमें फिर कुछ लोग होंगे जो मतलब मैं ये अचीव कर सकता हूँ बट मे बी अ डिग्री विल बी हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि एब्सोल्युटली सब लोग एक तरीके के, कुछ लोगों के लिए वो अप्रोच डिफरेंट हो सकता डिफरेंट हो है, राइट? सकता है एग्जैक्टली। तो इट्स इट्स अ पर्सनल व्यू। लाइक यस, अगर यस। इस पॉइंट को कोई अगर कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि नहीं ही इज सेइंग जस्ट बिकॉज एक्स वाई जेड, मतलब इट्स अ कंप्लीट पर्सनल व्यू, योर थॉट प्रोसेस। हम्म। I'll just take a very simple example. You did MTech, sir. यस, यस। My parents wanted me to pursue MTech just because they used to say like, okay, masters is a very important thing. या But suddenly, we had a professor in our college, और मैं उनका, I think he was doing in thermodynamics, MTech. No, हाँ, he was doing MTech, I think, and MTech final year he was pursuing, and he gave me some project to, compile it basically. So हम्म। what I went through was कि जो syllabus था, syllabus में कोई changes था ही नहीं. It was only, नहीं, नहीं, वो तो बहुत।20-30% difference. So at that time I came to know कि okay, जो difference है, it's all about he is doing MTech क्योंकि उनका ambition है professor बनना. So करेक्ट। after MTech he would be pursuing PhD, and then he would be going for, NET एग्जैक्टली। and everything. तभी वो final ambition he would be reaching. So again, करेक्ट, करेक्ट। that was his personal approach कि हाँ हमको MTech करना. But when it comes to knowledge, ज़्यादा कुछ कुछ नहीं वो है difference था ही नहीं. वो वही बात है ना कि मतलब हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रैक्टिकल वर्क पे फोकस नहीं है, बहुत कम है, और बहुत कम है. थ्योरेटिकल नॉलेज पे इतना ज़्यादा फोकस और ओवरबर्डन कर दिया जाता है स्टूडेंट को कि उसकी क्रिएटिविटी और वो जितना भी उसका पैशन रहता है उस चीज़ के प्रति वो नल एंड वॉइड हो जाता है, एंड ही स्टार्ट्स टू लुक फॉर अदर करियर ऑप्शंस जहाँ पे उसको वो पैशन मतलब जस्टिफाई लगता है। यहाँ पर मैं चाहे वो एक एक्टर बन जाए या फिर एक ट्रेडर बन जाए या वो कुछ और मतलब फ़िल्म मेकर, जहाँ पर उसके पैशन को वो लग रहा है कि वो रिटर्न मुझे मिल, जो बिल्कुल, मेरे सोल को जो सैटिस्फैक्शन मिल रहा है करियर में, तो वो आप वहीं मार देते हो उस चीज़ को यूनिवर्सिटी में। तो ये एग्जैक्टली. इसीलिए हम लोगों को क्यों, और एक मेरी थॉट ये भी है कि 10 साल पहले और आज के में, क्योंकि जो इवन अगर मैं किसी अभी जो 10th 12th जो कर बच्चा निकला है, अगर मैं उसको ये समझाने की कोशिश करूं कि 15 साल 10 साल पहले क्या सिनेरियो था और उस समय लोगों का थॉट प्रोसेस कितना ज़्यादा स्कैरसिटी माइंडेड था। अभी तो हम थ्योरी ऑफ अबंडेंस की बात करते हैं, हर चीज़ इतना बड़ा सोचो कि इतना बड़ा स्केल की प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। हम उस समय तक एक से ग्रेजुएट हो जाना एक स्ट्रगल। एब्सोल्युटली. बिल्कुल सर. और उसको फिर ओवरकम कैसे किया? ओके, सो ओवरकम का पॉइंट सर यहाँ इसलिए नहीं आ पाता है ना, बिकॉज मेरा एक एटीट्यूड है कि आई एम अ वेरी बिग रिस्क टेकर. सो मेरा ये कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसका पूरा शॉर्ट एनालिसिस एक बार पहले नहीं, कर। दो बार नहीं, नॉट 20-30 टाइम्स. अगर हमको फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1st of March को कुछ करना है, समथिंग बिग, इफ लाइक दैट इज नॉट ऑफ माई डोमेन, एनीथिंग, इवन इफ आई एम गोइंग टू बाय अ स्मॉल मोबाइल फोन वर्थ 5,000 rupees, आई डू अ लॉट ऑफ R&D बिहाइंड दैट कि हाँ क्या है क्या नहीं है क्यों है, ईच एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स समथिंग दैट्स इनटू माय DNA basically. Yeah, it's something God gifted जो I cannot change it. So I do a complete analysis before doing that. So what I was going to do, because at that time again CS IT मतलब सबके दिमाग में वही था back in 2016 कि हाँ एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब हो जाए, you are set, you are having monthly income, everything is done.
बट मेरा इंक्लाइनेशन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सिर्फ इसीलिए था बिकॉज मैकेनिकल कंपनीज वर वेरी लेस इन कॉलेज और आईटी कंपनीज वर द मैक्सिमम वन. एंड तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है एक अटेम्प्ट लेते हैं. इवन द सेकंड कंपनी जहां मेरा ऑलमोस्ट सिलेक्शन कॉलेज कैंपस से भी हो गया था, दैट वाज अ स्मॉल आईटी स्टार्टअप जो मैंने लाइक डिक्लाइन किया, सेइंग दैट ओके आई गॉट समथिंग व्हाट आई वांटेड. सो वो रिपेंट करने का मतलब आया ही नहीं कि हाँ मैंने स्विच किया फ्रॉम इंजीनियरिंग टू फाइनेंस. बिकॉज फाइनेंस में पूरा SWOT एनालिसिस ए टू जेड लाइक आई डिड इट एन नंबर ऑफ टाइम्स, सो दैट यू नो बिकॉज कल कुछ अगर गलत होता तो इट वुड हैव बीन लाइक कंप्लीट ब्लेम ऑन मी कि despite of being an engineer you did that and all those things went wrong. या जस्ट फॉर द लिसनर्स जिनको स्वॉट नहीं पता है, तो स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट करके एक मॉडल होता है करेक्ट बिजनेस में. करेक्ट. तो वो अगर आप कुछ भी लाइफ में डिसीजन लेना चाहते हो, जैसे जो बिगर फर्म्स होती हैं वो कभी कभी भी इन्वेस्टमेंट करती हैं, या फिर कोई नया प्लान या प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसके पहले ये स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट एनालिसिस किया जाता है, ताकि कल को कुछ भी फेलियर आने का प्रिडिक्शन पहले किया जा सके. क्या और जा जो रिस्क है वो कैलकुलेटेड रिस्क है. तो इट इज़ अ राइट वेरी सर. स्मार्ट वे टू डू इट इन फॉर योर करियर ऑल्सो, कि जहां पर आप पहले से ही सारे सिनेरियोज एनालाइज कर लो कि आपके स्ट्रेंथ्स के वीकनेस आएंगे तो कहाँ पे आएंगे, थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी हो सकती है या कितनी छोटी हो सकती है. तो इसको अगर आप फ्रेमवर्क में तो आपका जो जैसे कि वेबर ने बताया कि वो रिपेंड नहीं होगा आपको, क्योंकि आपने वो कैलकुलेशंस पहले कर रखी हैं अपने माइंड में एक पेज पर. और एक बार नहीं, 2-3 बार करें, क्योंकि फिर उससे एक बार में पूरी क्लैरिटी नहीं आती, तो मे बी 4-5 टाइम्स इफ यू डू इट, तो एक एक बेसिक फ्रेमवर्क तो समझ में आ जाएगा कि भाई मतलब मैं इसमें कितना सक्सेसफुल हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, या फिर मेरे जो वीकनेसेस हैं उसको मैं ओवरकम कैसे करूं. एग्जैक्टली. और इसका एक फायदा और क्या होता है ना कि इवन इफ समथिंग गोज wrong, even after SWOT analysis, if you have properly done it, so even if something goes wrong you have an option to correct it कि हाँ हम उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं एंड मूव फॉरवर्ड. एंड मूविंग फॉरवर्ड, वैभव आपने कोई एक कंपनी भी फाउंड की थी, को फाउंडर थे आप इनवरॉक के, करेक्ट. So the thing is उसके sir, बारे में like you बताएं know, कुछ. Yeah. so after completing my MBA, so what had happened was like to be frank I was never you know that much interested into jobs and all, because मेरे अंदर एक था कि do something of your own, create a you know a company of your own. Mainly we started a company called Inverock Ventures, and हमारा ऑब्जेक्टिव था to get into stock market, you know, advising people what to buy, when to buy, what to sell and all, pure financial advisory, you know, mutual funds, everything. Mm-hmm. So we are a registered mutual fund distributor. We were like you know a sub broker. So basically Zerodha is a stock broker. You have you know India Infoline is a stockbroker. So these are the mainly stockbrokers who are regulated directly by SEBI, and then SEBI allows them to you know acquire sub brokers. So sub brokers Mm. means people who are below them who are just working as a sales people for the company. Like okay, you acquire clients for yourself, and company does the revenue sharing with you. So I had my own set of clients who were working for whom we were working, for whom you know we were advising on financial markets, their finance and everything, like mutual funds, insurance, everything we used to advise them. So basically that was a startup that we did back in 2018, and it's still going on, and we are currently working for that. So yeah, it's a complete financial services company as of now. Not completely you know what I aspired to become. Like it's almost 10 years, but yeah, because the thing is, you know, this sector, when it comes to if you want to grow big, you need big funds. We Correct. attempted for few fundraising through VCs and all, but that was not possible. Might like they might have not liked the idea, but yeah, it's still going on a bootstrap mode. So we are completely into financial markets, like you know, selling mutual बट funds. इवन Yeah. इफ इट इज अ बूटस्ट्रैप, आई मीन इट्स, आई मीन आज के डेट में मैं जितने भी ये देखता हूँ. Yeah, it's a big thing because you know what I have seen you know in this thing VC funding and all, and these comments come from few of my friends who are into you know VC funded startups. They are founders. They say Baho, you know,
if you're doing with your own money, it's a great thing, because with VC money, there's come a lot of pressures also. They give you a lot of unexpected targets, asking to uh, achieve those goals like in the next 6 months, 1 year, which is even not that much possible. So again, pros and cons is everywhere. Once you and it's I think it's very much excuse me, it's very much genuine also. If let's say if I myself am investing some money somewhere, I'll surely want that money to grow fast and faster, right? That's everyone's objective in today's day, and that's how people come into stock market also. Like in today's world, 99% of the Indian population that I know, everyone has that some greediness inside them. If I'm coming in with 1 lakh rupees, I should get out with 2 lakh rupees at the end of the year, which is next to impossible. स्पेशली द न्यू कमर्स, And जिनको मतलब ये बिल्कुल ऐसा होता है कि पैसा अभी अभी डाला है, अभी अभी मेरे को रिटर्न्स, correct, तो absolutely, लोगों को जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स नहीं होते हैं, जिनको मतलब पेशेंस नहीं, कैसे पैसे को होल्ड करना एंड उसके बाद hold karna, रिटर्न जनरेट करना, correct, ये जो मतलब फास्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो कीड़ा होता है, उसमें फिर लोग right. And that's generally happening because आज के डेट में if you look at the SEBI's report, SEBI says like 93% of the people are losing money in stock market. So why is that happening? If that's a huge number, by the way. Yes, no? correct, like only 7% is making the money. So if you want to take my point of view, the thing is, the only point is those people who are losing are having unrealistic expectations. आज की डेट पे if you are getting even 10 to 12% from stock market, it's a big return. And the legend, like late Rakesh Jhunjhunwala himself said, like 14-15% return is great, but if you're getting 18%, that's something next to God. If you're getting 18%, you should be much more happier, because that's a very much unrealistic return that you're getting from the market. So anyone who is if someone is giving you, so let's say if I only if I pitch you like, okay sir, come invest through my stock ideas and I'll give you 40-50% return annually, you should step back, yeah, because that's sure, the biggest red what you'll flag. say, correct, the biggest trap possible. And that's how in today's date people are losing crores, like uh, only through media, what I am seeing into media, newspapers and all, like people in Mumbai, Bangalore are losing 7 crore, 8 crore, single person, 7 crore, 8 crore. Why? Because someone XYZ person approached them saying that, okay, I'll double your money every year, and that's the trap. They वो अक्षय invested, कुमार की एक मूवी थी, 21 दिनों में पैसा डबल. correct, and that's what most of us want, but that's not going to happen. So through this podcast, I also want to warn people, like ऐसा चीज करना ही नहीं. If someone, because my perspective is very much clear. Your inflation is 6 to 7%. FD is giving 7%. You're not getting anything. Anything if you're getting like 10 to 12%, any instrument, if it is mutual fund or anything like be it direct stock investment or anything, if it is giving you 12-13% per annum, you should be happier. If by accident or by chance if you get 15-16%, it's more than enough. Just imagine, like I think even if you beat the inflation, that's an that's a achievement. big thing, correct? I mean, for example, a person like me who is not a investor or who is not a trader or something, but if I have an advisor like you, or if I go to some company where I can put my money, who can put my money somewhere, Right, even okay, if for example if they are making it 12-13%, and even if the broker is taking like 2-3%, and even if I'm getting 10%, that is much bigger than if I'm able to beat the inflation, that I should be happy about it. absolutely. And that should be, because if you go for more return, that's a very very risky thing for any one of us. And Yes. that generally happens with the middle class, I'll tell you. Again, I told you, like to my surprise, when I see like people with 8 crore and 10 crore losing, that's really surprising to me, because what I know through my HNI clients are, happy with 12% return. Like whatever mutual fund I advise them, if that is giving them around 10 to 12%, they are pretty much happier. Because they again say like, okay, if I invest in FD, I just get 7%. I'm getting almost double. Like instead of 7 ka 14, you're getting 7 ka 12. So that's pretty decent Makes return. sense. Yes.
Correct. So and again, the larger corpus you have to minimize your risk appetite. Again, you will find 2 to 3% of the population who are very much risky, and they would say, "Look, no, I would risk again 10 crore, put a 10 crore into future and options, which is very much risky." Personally, I wouldn't suggest anyone to get into derivatives, because Mhm. derivatives is according to Warren Buffett, it's a weapon of mass destruction. Because derivatives आपका 1 लाख का हो सकता है, एक महीना में 10 लाख भी कर दे. But there's rarely like 1 or 2% people who are genuinely making money out of derivatives. So the best thing is take a route of mutual funds. They are the best thing because they are managed by highly experienced and knowledgeable people. And second, if you want to get into direct stock investment, just start with blue chip companies, or the companies that very like there's a concept like what again the thing is it comes through experience. What I'm speaking out today has not come into my mind. Even if you would have taken an interview 10 years ago, I would have said like, so let's invest 2 lakh rupees, I'll make 20 lakh rupees within a year, because that was the mindset. Yeah, yeah, yeah. That same mindset, that the herd mindset. But yeah, Hmm. after 10 years, I have realized, look, okay, what's the importance of that 12% also? I think So this is the difference between a noob in this correct, field and an expert. Like after you spend a good amount of time and decent amount of years of hardships going through, analyzing the up and downs and all the challenges, then you get these kinds of insights. कि absolutely अंदर में क्या है, and what is the long term principle which you right, sir. should follow to survive this career in the longer term, right? एंड एक मेरा क्वेश्चन और भी है, मतलब जस्ट टू ब्रिंग यू बैक, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि वी कैन हैव अ सेपरेट पॉडकास्ट अबाउट गिवन द एक्सपीरियंस यू हैव इन द मार्केट फील्ड. मतलब हम एक दिन मार्केट पर भी बैठकर बात कर सकते हैं कि हाउ Sure, दिस sir. इन्वेस्टमेंट सिनेरियो वर्क्स इन इंडिया. Works. बट अभी अभी जस्ट टू come back to the career point of view, for the young students who are just graduating, who are in bachelor's or who are even in masters or whatever they are, or basically a young one who is in the STEM field and who wants to make a career into this financing and investment. What is your suggestion, like to first to get into some kind of low level company where you can at least get hired as an intern, or you should, because if you are changing the field, it means कि फर्स्ट टाइम में आपको कोई देगा नहीं नौकरी, तो आपको कहीं से तो इंटर्नशिप या कुछ करना पड़ेगा ऐसा कि जिसमें आप पहले एक 6 महीना 8 महीना या 1 साल किसी किसी स्मॉल फर्म के अंडर में आप काम करो, या इवन बिगर फर्म, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज यू, मैथमेटिकल नॉलेज और जो भी उसके लिए उस काम के लिए जो भी स्किल्स. लेकिन एक इंटर्नशिप आपके लिए दरवाजे खोल देती है कि हाँ ठीक है, आपने 6-8 महीने कुछ करके डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, उसके बाद यू कैन गो फॉर द बिगर फर्म्स एंड अप्लाई फॉर द बिगर फर्म्स. इज इट द राइट पाथवे? Yeah. So one thing I would segregate first, sir, like जब finance की बात होती है ना, so there are two types of finance. Like एक जो main core finance है, the corporate finance. So that is what you're doing basically into the finance domain of any company. Accounts, balance sheet, क्या पैसा आया गया, expense and everything, right? So that's the basic fundamental of any company. कि हाँ finance कैसे बन रहा है. Second finance is the financial market that we are discussing right now. तो जिसको उस डोमेन में जाना है, like the corporate finance thing, so people can go through it, like and there they can go through any companies. Like आज की डेट में either you can get into an small company as an accountant, or maybe in a bigger firm as a finance manager and all those things. But when it comes to this domain, the financial market domain, so basically इस domain में आप banks को भी include कर सकते हैं. So basically इस domain में आपको banks आ, you have stockbroking firms, you have asset management companies, you have research analyst companies, like जो companies पे research करती हैं. Okay, you would be seeing like sometimes like companies like Morgan Stanley, Cities publishing report. You would be knowing the companies like uh, you have Barclays. So these are या the जो मार्केट big, का भी रिसर्च करती हैं, correct, किसी सेक्टर का भी रिसर्च करती हैं right, किसी इंडस्ट्री में. absolutely. They are into investment banking also.
आई थिंक So डेटा एनालिस्ट लोग भी इसमें आ सकते हैं, मतलब a जिनको lot, डेटा करना या a lot, because आज की डेट में जो आपका ये है जो क्वांट सेक्टर है, तो क्वांट इट्स ऑल अबाउट डेटा गैदरिंग, मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, सेग्रीगेशन ऑफ डेटा, क्लीनिंग एंड एवरीथिंग. सो एल्गो ट्रेडिंग अगर आप ले थोड़ा लीजिए. समराइज में करें तो मतलब नंबर से मीनिंग निकालना। करेक्ट, एब्सोल्युटली. सो इसमें बेसिकली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मार्केट, लेट्स से अगर कोई नोवाइस आज के डेट में एंटर करना चाह रहा है, तो फर्स्ट थिंग आई वुड से आज का जो एनवायरनमेंट है, तो बेसिकली आज के डेट में ना हर कोई व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मार्केट सब कोई घुसना चाहता है एज अ ट्रेडर और एज अ फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर. बट ये जो सेक्टर है, जो ये जो डेजिग्नेशन है, बेसिकली you can get into very small companies as a trader, equity dealer. So basically trader or equity dealer in Indian markets are almost same. कि equity dealer is someone जिसको जो you would have seen like in brokerages firm, like आपने काफी movies में देखा होगा कि people are calling over the phone and saying कि मेरा ये share ले लो, ये बेच दो. So बिल्कुल the बिल्कुल। person who is operating that system, the laptop or the monitor, is basically designated as equity dealer. ओके। So उसका एक अलग एग्जामिनेशन होता है, NISM सीरीज 8. So anyone like any graduate can take that exam. उस एग्जामिनेशन का 3 साल का वैलिडिटी होता है, and then you can get into. So for me when I entered Sirota, even I had to clear that NISM series 8. So that's a benchmark, like आपको करना ही करना है. So the way if you want to get into mutual funds or a mutual fund distribution, you have to clear NISM series 5 certification. So all these certifications are compulsory to get into. आपका graduation कुछ भी हो, even डजंट if you are मैटर। MBA, anything, you have to clear these things in order to be a registered uh, person into the company, because everything is reported. Compliance is very much strict. आई So थिंक दिस इज वेरी न्यू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता शायद कि ऐसे रोल्स होते हैं जहाँ के मतलब फाइनेंस में ज़रूरी नहीं है कि आप केवल ट्रेडर ही हैं या पोर्टफोलियो मैनेजर ही हैं, या correct, फिर मतलब देयर इज़ अ वास्ट रेंज ऑफ, जैसे आपने बताया कि वो जो पिच कॉल्स होती हैं उसको मैनेज करने वाला एक इक्विटी मैनेजर होता है, तो मतलब इस टाइप के भी रोल्स होते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो correct. सकते हैं। And और that's basically the entry level job. Equity करेक्ट। dealer होता है, that's and that is 99% job आपको उसी सेक्टर में. So the the issue with those jobs are like most of the people are not interested in that profile, because वहाँ क्या होता है, वहाँ पे sales compulsory हो जाता है. Almost with every brokerage firm, so you have to bring in your own clients. The thing is excuse me, what I just say to people whom I meet, like the young guys who want to get into this. The thing is, what people understand about financial market is portfolio management, trading and all. But what I feel is the basic of financial market is sales. Because unless and until you do sales and bring in clients, आप किसके पैसे पे trade करोगे या करेक्ट investment करेक्ट। करोगे, right? Once your company, let's say we have a company, for example, uh, you have Morgan Stanley, right? So Morgan Stanley के पास अपना set of clients है, correct? So these companies are basically mainly like बड़े से बड़े लोग, even the partners, the directors, and the higher management of these companies are getting into sales. They are bringing in clients, and then your advisory team is advising the clients like, okay, so buy this stock, sell, and all those things. So sales is the fundamental of this sector. फिर उसके बाद आता है आपका equity dealers, and then portfolio managers, traders and all. So एक so इसमें basically the thing is, once you are getting into it, पहला चीज है passion develop करना. Once you have passion, get these certifications required, be it an SM series 8 or 5. 5 is very much compulsory. आज की डेट में हर बैंक एम्प्लॉयज को 5 almost clear करना पड़ रहा है, because they are selling mutual funds to their customers. Similarly, if you want to get into the research side, like आपको research analysis करना है, for that again you have a separate certification. So the thing is, SEBI ने like, even if you have to get into the merchant banking and all, like जो IPO आता है, investment banking part, so everything you have to qualify a separate certification. You have compliance officers. So compliance officer means the person who looks into the compliance side, the legal side of any stockbroking firm, because you have to report each and everything to SEBI almost one or the other day. Like there are many levels of segregation for reporting to SEBI.
तो वो कौन कर रहा है, वो compliance officer कर रहा है. So even the compliance officer, if he's a company secretary or a law graduate, he has to clear a Clear these exams. SEBI examination for becoming a compliance officer. The thing is, apart from your degree, you have to clear these examinations to get into broking firm or any AMC like asset management company or research analysis firm. So that's how like it works. But like the entry level is a bit tough, what I feel, because I tried for almost every this thing. What do you say? Hooks and crooks. Correct. So even I wanted to get into that, that trader's role or that portfolio The manager. fancy role of traders, Correct. like But the thing is that fancy role is almost reserved for either IITians or IIM. That's the fact. Or if you're an experienced guy with 10-15 years experience, and that too you should be tier one. Tier one is a compulsion each and everywhere. it adds the extra layer of Correct. protection. Correct. And if you're into the from mathematics background of or something into quant and all, so people would prefer you more. Correct. Or at least, I mean, if you're not coming from these tier one, these fancy colleges, at least you should have something in your resume that kills that. Correct. Like, I have some Bilkul. experience of working with some really good company in finance for like 1 year, and you have the appreciation letter from the director or whoever is the head of that department or company. Then at least it will give you an edge in Right. front of these IITians or IIMs people. So at least you should have some extra thing to bring to the table that kills off, or that at least neutralizes that privilege of the top tier colleges, right? Absolutely, And sir. just to summarize, if I got it right, like, if we start with the basic building blocks, you should be good with maths, you should be good with sales. I think we somewhere I read, we are, at the end, we all are salesmen, some or Absolutely. the other way. We have to sell Correct. ourselves, even if you are an actor or a teacher or whatever. I mean, if you want to be good in your game, you have to be Right. a good salesman. Salesperson. Like Correct. this is the place where the sales brings you extra points, because it is all about sales and bringing you the best of yourself. And then if you go through this, if you get some internship roles or the entry level jobs which Vaibhav mentioned, and then you can build on that with some acquiring some certifications. So once you are in the game, you will be definitely knowing, or you can go back to a few minutes back where Baibhav was speaking about these certifications and the examinations of SEBI and the others. So layer by layer in the hierarchy, you can go up. And so Vaibhav really very nicely pointed out like how you can jump from one level to the other, and what could be the challenges if you are not from the top tier colleges. And of course, he gave really deep insights about the market, how it functions, what are the behind the curtain stories. And it was really insightful. I think I will need another 4 or 5 sessions with him, because I'm really curious about these subjects, and I think we will have some more sessions in the coming times. Vaibhav, before you leave, few lines, some short summary, what you would like to give to our younger fellows who just are getting into this sector. One short suggestion, or whatever you like to suggest to them. Okay, so what I feel in today's state, we are into the biggest booming economy of the world. Our economy is opening, Absolutely. financial markets are opening. आज की डेट में you can see पहले क्या होता था इंडियन मार्केट्स में FIIs like financial institutions, foreign institutions were the the big daddies, you can say. Like they FIIs were the one, FPIs were the one who used to run the market. आज की डेट में इंडिया इतना सेल्फ एफिशिएंट हो चुका है कि आज म्यूचुअल फंड कंपनीज आर मच मोर एनफ. आज की डेट में वो लोग 1,000 करोड़ खरीदते हैं तो सामने से 2,000 करोड़ का बायर बैठा हुआ है. तो वी हैव अ पैसे का कमी इंडिया में आज की डेट में नहीं है. यू हैव अ लॉट Correct. लॉट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड वी नीड लॉट ऑफ शार्प माइंड्स इनटू दिस सेक्टर.
And to my knowledge, what I know is, we are the uh, sharpest brain across the world when it comes For to the sure, Indian yes. minds. So we have a lot of opportunity to grab into this sector. The only thing is keep that fire burning into your belly and just Yes, get into the sector, proper insight. And again, you have your seniors to lead you, so that in the next coming 25, 30 years, we can take over even US when it comes to financial market as well as the economy part, correct, correct. because we are already in that top 5. So India has a lot of opportunities to explore, be it in For sure. any sector. So Yeah, just it's the time of resurgence of Bharat back. correct, absolutely, sir. Yeah. So it was a very it was a delight to talk to you, Vaibhav. Same here, sir. And just before we end, I think मुझे जो पूरा समरी समझ में आया, अप्रोच बहुत ज़रूरी है, Correct. क्योंकि आप किस तरीके से अप्रोच करते हैं किसी चीज़ को, और अगर आप फिनेंस के सेक्टर में या इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको एक लंबा गेम खेल, कैनॉट बी शॉर्ट Not इन at एंड all. यस, तो ये शॉर्ट टर्म गेम है ही नहीं। और दूसरी बात कि अब अगर आप इस फील्ड में आए तो बहुत सोच समझ कर आए, आपको लंबा टाइम बैठना पड़ेगा, बहुत बहुत सारा पेशेंस के साथ, एंड बहुत सारा मैथमेटिक्स। जो भी यंग लिसनर्स हमें सुन रहे हैं जिनको इसमें करियर में एडवाइस चाहिए, यू कैन सेंड अस इन द कमेंट्स, आई कैन ट्राई टू गेट सम आंसर्स फ्रॉम वैभव। लेजिट क्वेश्चंस होंगे जिनको रियल में नीड और हेल्प चाहिए, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारा नेक्स्ट सेशन भी हो। मैं कोई Sure, sir. इंटरेस्टिंग टॉपिक लाऊंगा, क्योंकि अब मुझे एक इंसान मिल चुका है जिसको मैं डग आउट कर सकता हूँ पूरा फिनेंस मार्केट समझने के। तो मेरे पास क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, और वैभव फॉर श्योर यू कैन आंसर दैट, आई नो। Always there for you, sir. तो अभी हम लोग, थैंक यू वेरी मच, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। Sure, sir. Thank you so